and welcome to the special broadcast on Haryana and Jammu and Kashmir election results coverage. Today is a special day, and clearly National Conference has emerged as a true winner. While there were unexpected turn of events in Haryana since noon. Now, both BJP and Congress have emerged. They have in fact improved their tally from the last elections. But unexpected votes from the Jats have tilted the game in BJP's favor. We will discuss about Jammu and Kashmir election results in greater details, but we'll also talk about the interesting story which played out in Haryana today. I have with me my colleagues Asha Khosa, who's an expert on Kashmir. On my right is Malika Asghar Hashmi, who's an expert in Haryana. And my third colleague, Mansuruddin Faridi, of course, is an all-rounder. So let's begin our discussion on this coverage today. Asha ji, let me come to you first. What are the takeaways of Jammu and Kashmir elections today? Well, Jammu and Kashmir election has been interesting in the sense that these exit polls, they had predicted the outcome, but there was a big question mark. They had put a big question mark. Saying that, or it was across the board, every exit poll was saying, no, it is going to be hung assembly. That was the only common thing between all the exit polls. Right. Well, while it was not so, clearly NC, National Conference, is a clear winner. And overwhelming majority, if not overwhelming, they've crossed the midpoint. And BJP also is not a loser, because last time they had 25 seats, all from Jammu. And this time they have some close to 28 or 29 seats from Jammu. Now, that is the takeaway, that while people have voted in large numbers for two reasons. One, clearly there is an NC wave, both in Jammu and Kashmir, in parts of Jammu and Kashmir all over. Secondly, people have voted in large numbers because they have expectation. They have expectation of peace. This peace will continue. There will be more development. People have a lot of aspirations. And third, most important thing is they have faith in democracy. It is people are not talking like that, but they have, through their action, they have made it clear that they will go for democracy rather than for the gun. It's a clear slap on the face of separatists or those peddling soft separatism narratives. And all those people have been defeated. And I am a little surprised, and I'm really enjoying that thing, that CPIM candidate. CPIM is losing ground all over the world, I think, in India. But one candidate, Mohammed Yusuf Tarigami, he has won for the 5th consecutive term, that too against a Jamaat-e-Islami supported candidate. He's a proxy candidate of Jamaat-e-Islami, and from a constituency which is known as the bastion of Jamaat-e-Islami. How interesting it can be. So people's vote for democracy, for development, peace, that is my biggest takeaway from this election. Wonderful. Now we'll just give you a glimpse of what our reporters have been doing all through the elections in 3 phases in Jammu and Kashmir. They have been covering it tirelessly. Let's take a look. आइए अब हरियाणा की बात करते हैं। हाशमी साहब, हरियाणा में एक ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ। पहले कांग्रेस लीड कर रही थी और फिर वहां पे ये बात आने लगी थी कि जलेबियां बनेगी कांग्रेस कैंप्स में और वहां पे सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे दोपहर होती गई उसके बाद जो पता लगा कि एंटी इनकम्बेंसी जो है उसने काम नहीं किया और बीजेपी इज इन फॉर अ हैट्रिक इन हरियाणा। साफ है कि महब सिंह सैनी जो कि 6 महीने के उनके शासन में उनका जाहिर बात है कि जो एक प्रदर्शन रहा हुआ शानदार है। तो क्या कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद
इस जीत का सेहरा जो है वो सैनी साहब के सिर पर बनना चाहिए? पहले तो दिलचस्प बातें हैं 54 वर्षीय सैनी साहब के बारे में कि उन्होंने LLB की पढ़ाई बिहार से की, मुजफ्फरपुर से। अच्छा। और तो बिहार कनेक्शन जी। और दूसरी बात ये है कि जिस आदमी ने उनको पॉलिटिक्स में लाया, यानी कि खट्टर साहब उनके गुरु हैं, और खट्टर साहब 2 बार रहे CM, दूसरी बार ये भी CM रहने जा रहे, ये दिलचस्प बातें हैं। रही बात ये कि सैनी साहब को वाकई जो है कम मिला, जिस तरह का उनका अनुभव है, वो सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हैं, MP भी रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, RSS के लोग हैं, तो वो बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। वो उनको टाइम बहुत कम मिला। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 महीने में ये उन्होंने जिस तरीके से, और जिन में इनको लाया गया, जाहिर सी बात है कि पीछे वाले जो CM साहब थे उनको ऐसा ऊपर वालों को लग रहा था कि शायद इनके काम जो है उस तरह से नहीं, जो रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाएंगे, तो इनको लाया गया। 6 महीने में ज़बरदस्त चमत्कार किया। पिछले इलेक्शन में 40 सीटें थी बीजेपी को, और अभी 4850 के आसपास हमें सीटें दिख रही हैं। तो एक तो ये हो गया कि अब सीटें भी ज़्यादा आ रही हैं। दूसरी बात है कि ऐसी स्थिति में आया कि 6 महीने ही उनको मिला, ज़्यादा उनको टाइम भी नहीं मिला, और उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया। जैसे मैं मिसाल के तौर पे उदाहरण गुड़गांव का देना चाहता हूँ कि गुड़गांव की सफाई की स्थिति बहुत ख़राब थी, और गुड़गांव जो है रेवेन्यू देता है 46% के करीब आसपास देता है हरियाणा गवर्नमेंट को वहाँ से, तो लोगों में बड़ा गुस्सा था। सैनी साहब जैसे ही आए, उन्होंने 3 महीने का उन्होंने वो लगा दिया धारा 144, और 6 IAS सिर्फ सफाई के लिए लगाया। अच्छा। सिर्फ उसको कि क्योंकि ये चेहरा है हरियाणा का, तो इसलिए, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये इनको थोड़ा और ज़्यादा मौका मिलता तो जाहिर सी बात है कि जो गिले शिकवे थे उसको दूर कर सकते थे। तो जो नाराज़गी थी, एक तो उससे दूर किया। दूसरी बात है कि कुछ मिनिस्टर्स को उन्होंने जानबूझ के टिकट नहीं दिए, उसको लेकर के आम धारणा ये थी कि शायद इससे बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। और हमें रिजल्ट में देख रहे हैं वो उभर के जो आ रहा है सामने कि एंटी जो सरकार के खिलाफ जो विरोध था वो बिल्कुल शांत हो गया है, और एक नई उम्मीद है। जनता उनको फिर दोबारा चुन करके आई है, लेकर के आई है, ये उम्मीद के साथ कि बीजेपी जो पिछली गलतियां करी है वो शायद सुधार दे, और फिर एक अच्छा मतलब हमें CM देखने को मिलेगा। शानदार प्रदर्शन रहा उनका, क्योंकि पूरा जिस तरह से एक छोटे से एक टाइम स्पैन में उन्होंने सब चीजों को संभाला, एंटी इनकम्बेंसी को संभाला, और फिर एक जो जाट वोट्स की बात चल रही थी कि वो उसमें डिवीजन हो सकता है, तो देखिए दोनों चीजें, एक तो कंसोलिडेट भी किया कि नॉन जाट वोट्स, नॉन जाटों में एक तो उन्होंने सबसे पहले एक उनके काम से या उनके व्यक्तित्व से उसका प्रभाव पड़ा, और ऐसा लगा था कि जाट जो है एकदम चले जाएंगे हुड्डा के पीछे, यानी कि कांग्रेस के पीछे। ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात, जो अहिरवाल क्षेत्र है उसमें लगभग 22 सीटें हैं, और वो सारे के पीछे के भी रिजल्ट जो है इतने अच्छे नहीं थे। इस बार लगभग 22 सीटें आ रही हैं अहिरवाल में, तो ये अहिरवाल से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। अभी अब तक का जो रुझान है उससे बीजेपी की जीत में अहिरवाल का बड़ा महत्व है। जी जी, जाहिर बात है अब कांग्रेस कैंप्स में जलेबियां नहीं बटेंगी, लेकिन अब हम अपने दर्शकों को एक अपडेट दे देते हैं। फिलहाल जो हमारे पास अपडेट्स आए हैं, हरियाणा में बीजेपी 26 सीटें जीत चुकी है, कांग्रेस 20 जीत चुकी है, और बीजेपी 50 में आगे है, कांग्रेस 35। उसके अलावा NLD 2 सीटों में आगे चल रही है। अब मैं रुक करूंगा फरीदी साहब को। फरीद साहब, आप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रहे एक लंबे अरसे, आपने वहाँ पे एक रिपोर्टिंग भी की है, क्या लगता है आप वहाँ का जो मैंडेट है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं आदिल साहब, 370 हटने के बाद मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज ने तो इशू बनाया था, लेकिन मेरे ख्याल में जब वोटिंग हुई है उसमें कहीं भी पब्लिक की तरफ से उसका जिक्र नहीं हुआ, और जो रुझान था वो पोलिंग का, उसमें इश्यूज जो थे, रोजगार था, बिजनेस था, जो भी था, लेकिन वो 370 नहीं था। तो एक तरह से पब्लिक ने, कश्मीरियों ने उसको साइट करके वो पोलिंग की है, वोटिंग की थी उसके लिए, और उनका जो नजरिया था वो तरक्की मेन था। तो दूसरी चीज ये थी कि इससे NC का पहलू था बहुत बड़ा। हम भी जानते हैं और आप लोग जानते हैं, आशा जी आप बेहतर जानती होंगी कि NC का कितनी मजबूत जड़ें हैं उनकी। तो वो एक बार फिर साबित हो गया कि उसको अभी हिला नहीं पाए। उसमें एक चीज एंगल ये भी थी कि अब्दुल्ला खानदान ने इस बार 3rd जनरेशन को अपने इन्वॉल्व किया था। उमर अब्दुल्ला के बेटे जो थे वो
अट्रैक्ट करने के लिए फोर्थ जनरेशन को उन्होंने इन्वॉल्व किया था पोलिंग में, और वो उन्होंने चुनाव मुहिम में हिस्सा लिया था और हर जगह फेस बन के सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला थोड़ा पीछे रहे, आगे बच्चों को किया, नई जनरेशन को मैसेज दिया कि हम जिस तरह पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने किया, अपनी बेटी को आगे लाए खड़ा किया, इस तरह जो जनरेशन को नुमाइंदगी दी है वो तो चेंज आई है, उसका ही असर पड़ा है। लेकिन पब्लिक का जो एक है कि पब्लिक ने एक बदलते हुए कश्मीर को एक्सेप्ट किया है। जो आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो चेंजेस आए हैं उसको पब्लिक ने महसूस किया कि ये चीजें अगर आती रही तो बहुत जिंदगी चेंज हो जाएगी, तो उसका एक बहुत असर पड़ा है। एनसी की भी ऑलरेडी जड़ें बहुत मजबूत थी। पीडीपी के बारे में पहले उन्होंने बात की थी और आशा जी भी इस बारे में बोल चुकी थी कि शायद इससे ज्यादा और कुछ नहीं जीत पाएंगे, उतने ही पे वो टिके हैं। और 40 सीटें इस वक्त 41 सीटें एनसी के हिस्से में आई हैं और 27 के पास बीजेपी है। तो बीजेपी के लिए एक पहलू ये बहुत अच्छा है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे वो उभरी है। पहले भी उसी पोजीशन पे थी, लेकिन अभी और सीटें उनकी बढ़ी हैं जम्मू रीजन में। जबकि आम ख्याल ये था कि शायद जम्मू में 370 हटने के बाद कुछ नेगेटिव असर पड़ने वाला था तो शायद बीजेपी को नुकसान होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने वहां पर ज्यादा फायदा हासिल किया है। लेकिन कश्मीर में ओवरऑल एनसी के जीतने से आप ये कह सकते हैं मैंडेट है पब्लिक का, डेमोक्रेसी की जीत होती है वो हर हाल में। अब है कि काम कौन कैसे करता है और कितना स्पेस मिलता है काम करने के लिए, वो बहुत अहम होगा इनके लिए। Let me now go straight to my colleagues on the ground in Srinagar, Yasmin Khan and Nazir, who have now joined us, and they have done a fabulous job of coverage of elections there, and their videos have really done well. Welcome to the show, Yasmin. My first question to you is that Omar Abdullah's Pagadi sympathy card, it appears, has worked for him. Give us an overview of the results, and when is the new government formation ceremony going to take place now? Yes. This assembly election, particularly this one, especially after the abrogation of Article 370, this was the first election that happened after a gap of 10 years. People were really eager to vote. तो अभी तक जो भी बीजेपी ने यहाँ पे किया, जो भी पॉलिसीज नई लाई गई, जो नया कश्मीर का आइडिया था, वो सारा फेल हो गया। क्योंकि आज के जो वोट पड़े हैं, बिकॉज आई हैव सीन लाइक अ लॉट ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स या जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स है वो ये कह रहे हैं कि नया कश्मीर की वजह से वोट पड़ा। लेकिन अगर नया कश्मीर की वजह से वोट पड़ा होता तो डायरेक्टली वो वोट शायद बीजेपी के खाते में जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो एनसी के खाते में गया। और जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की वहां पे हमें ये पता चला कि ये जो सारा वोट है ये एंटी बीजेपी वोट है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते थे कि कश्मीर में किसी की भी जीत हो लेकिन बीजेपी की नहीं होनी चाहिए। तो बीजेपी को कश्मीर से दूर रखने के लिए शायद लोगों ने इतने बड़े नंबर्स में वो घरों से बाहर आए और वोट डाला। अब आज का जो दिन है एनसी के लिए काफी सिग्निफिकेंट है और अभी भी कुछ घंटे बाकी है और हो सकता है कि ये अपना जो 46 वाला नंबर है, मैजिक नंबर, वो ये क्रॉस भी कर सकते हैं। अब रही बात उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला स्टार्टिंग में मतलब ये भी अज्यूम किया जा रहा था दैट ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज ही कंटेस्टेड फ्रॉम 2 सीट्स, दैट्स बडगाम एंड गांदरबल। बट इवेंचुअली हमने ये देखा कि लीड जो है बहुत बड़े मार्जिन से वो कर रहे थे बोथ ऑन बोथ द सीट्स, गांदरबल एंड बडगाम, एंड इवेंचुअली ही हैज वॉन बोथ। तो कहीं ना कहीं जो एनसी का अपना एक कार्डर है वो स्ट्रॉन्ग था, वो डे 1 से, चाहे फिर आर्टिकल आया, नया कश्मीर आया, जितनी भी चेंज आई, बट वो पहले दिन से अभी तक उनके साथ था। और लोगों को ये भी लगा कि ऑन ग्राउंड, अब चूंकि मैंने पहले भी बोला कि असेंबली इलेक्शंस जो है छोटे इश्यूज पे लड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं पीपल आर वेरी होपफुल कि जो उनके पानी, बिजली, सड़क के इश्यूज है वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि शायद एनसी ही ठीक कर सकती है। तो ऐसे में अब एनसी के लिए जो दिन है काफी फ्रूटफुल साबित हुआ आज। राइट। अब नजीर के पास चलते हैं, अगर नजीर जुड़ गए हैं तो उनसे बात करते हैं। नजीर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। क्या लगता है आपको, जो लोगों का जो मैंडेट है जेएनके में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग days for journalists on the ground, going from one constituency to another constituency, and every constituency throwing different surprises to all of us. We went from north to south, and we saw one wave in south, another wave in north, and then central just talking about national conference. And ultimately, now what figures suggest us
National Conference has swept entire Srinagar, and it has also maintained its lead in north and south also. And Congress doing really good as far as Tariq Kara, the state president, is saying that Congress has shown that we have a base in Kashmir at least, and we could have done much better in Jammu also. तो वो सब चीजें मिला के मुझे लगता है कि this election is very significant because this is being held after 10 long years, and people were so overwhelmed to come to the polling booths to cast their ballot and also express aspirations. For many people, it was a vote that was against BJP. Largely, like 90-95% people who cast their vote against the policies during the BJP rule and all. अब इसमें बीजेपी ये इंजीनियर रशीद का जो फैक्टर रहा उसकी सबकी नजरें उस पर थी, और पार्लियामेंट में जो उन्होंने अपना कारनामा किया था और उसका बिल्कुल भी असर इस असेंबली में नहीं रहा, और कुछ ऐसे नाम जो उसने जो अपने पार्टी के साथ जोड़े थे उनको भी उसका खमियाजा करना पड़ा. सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स who have been retained in the seats from last 1997, like Ghulam Hassan Mir, who was MLA of Gulmarg constituency, had to lose finally that constituency and it went to NC. And this Imran Raza Ansari, who's a Shia leader and was contesting from Patan constituency, which was his bastion, has finally lost that constituency. This has given us this understanding that people have said no to the incumbent MLAs or people who were part of their constituencies. Now people have expressed their concern for the development, for the dignity, and also for addressing a larger issue, which is unemployment in Jammu and Kashmir. Right. Ashaji, Farooq Abdullah's first statement was quite measured, when he came on the screen, and after the trends were, looking up for him, he said that, Omar Abdullah is going to be the chief minister, but when he was asked about the Congress performance, how much credit goes to Congress, he didn't say much about that. But now, what do you think should be the priority for the new government in J&K? Well, I think the most crucial work begins now with the formation of the government, which obviously is going to be led by Omar Abdullah. He's a young leader. He comes across as a very what should I say? A very sensible, a very sober leader. He is not given to the dramatics like his father does. And as far as governance is concerned, he has an okay kind of a record. He has already served one term as chief minister. He was twice minister in the MOS. In the center. The center was okay because there was a big team to supervise him. But in J&K, he was just okay. Whenever there was a crisis, he couldn't contain it. Like the stone pelting incidents, most of the killings happened during his tenure. Probably he could have stopped it. He couldn't. After that, there was a big flood, and he couldn't do anything about that. So maybe he has learned his lesson. Maybe he has grown up, and he'll do better. But the challenges that before him are so many. First of all, he has to do the regional balancing. Let's admit it, his party has largely won from Kashmir region and a few seats in Jammu. And Jammu has basically given its verdict, if we take these two as separate entities, for BJP. Now BJP is going to sit in the opposition, looks like, and the NC with a few Congress people is going to rule. And there is a threat there that Jammu will feel alienated because they have voted for a party which is in the opposition now, and that is part of democracy. Jammu already has a lot of anger. There are movements that Jammu should be separated from Kashmir. Why should we live with a majoritarianism? Something like that. Those kind of slogans are there. Right. Now, will those... he has to take care of those forces. Those have to be accommodated or kind of addressed to. Secondly, the challenge in Kashmir is not over. I'm talking about the threat from outside. Pakistan will not give up on its designs on Kashmir. In some way or the other, it will modify its response. And radicalism is a big threat. There is a lot of radicalization in Kashmir.
which has to be addressed. There is drug addiction, which is already being addressed, but the problem is so big that it's very difficult to be addressed. Yes. Then there is another threat. I'll briefly tell you that J&K should not become something like a Delhi state. There should not be constant conflict between center and state. It is not in the interest of National Conference, not in the interest of UT and the center. But how do they do it? That remains to be seen. These are the few challenges before Umar Abdullah. Sure, we'll come back to this again, but now we'll take this occasion to show you our promos of Awaz the Voice, the kind of work we have been doing. If my producers can play out our promos. पैगाम लोगों में मोहब्बत का, कहानियां देश के मजबूत ताने बाने की, खबरें देश के गौरव की, लाते हैं आप तक हम आवाज द वॉइस। गूंजने लगी है अब समावेशी भारत की आवाज। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लोगों के दरमियान मोहब्बत का पैगाम। हम आगे की कहानियां, मुल्क में तरक्की और शादमानी की खबरें, लाते हैं आप तक हम आवाज द वॉइस। गूंजने लगी है कौमी यकजहती की आवाज। आशिफ साहब, अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जो हैं वहां पर देखें तो कांग्रेस ने इस बार परफॉर्म अच्छी तरह से किया है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो क्या ये अब कहा जा सकता है कि जो मुस्लिम वोट्स है अब वो पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट होने लगा है? देखिए, अब जो जिन तीन सीटों की बात हम करना चाहेंगे यहाँ पे, नूह, फिरोजपुर, जिरका, पुनाना, ये पीछे भी कांग्रेस की सीटें रही हैं और उन्हीं सीटों को उन्होंने दोहराया है। इस बार जीत का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है और मेरे ख्याल से ये जो नूह का जो दंगा हुआ उसका भी कुछ असर हुआ है, पोलराइजेशन हुआ था और उसका असर हमें देखने को मिला। वो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि पुनाना, जिन पे आरोप लगा पुनाना के एमएलए ममन खान पे कि इन्होंने भड़काऊ बयान दिया था, उसके बाद ये घेराबंदी हुई थी, वो 1 लाख वोट से जीते हैं वो। तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, कि बड़ा मार्जिन है। विधानसभा में इस तरह से इतने वोटों से नहीं जीतते हैं आमतौर से लोग, लेकिन सिर्फ इनका ही नहीं और जितने भी जीते हैं सब 25,000 से ऊपर के मार्जिन से जीते हैं। तो बड़ा जो है, हालांकि लोकसभा में हमने देखा था 75,000 के करीब मेवात से बीजेपी को वोट मिले थे, जो रामजीत को, लेकिन रामजीत के खुद की पर्सनालिटी ऐसी है जिनकी अपनी पकड़ है वहाँ पे और वो उनको देते रहे हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा वोट पड़े थे। लेकिन ये हमेशा ऐसा होता रहा है कि बीजेपी की अब पिछले 2 टर्म से मैं ऐसा ही देख रहा हूँ कि लोकसभा में बीजेपी को वोट दे देते हैं, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं। और हमेशा से कांग्रेस का लगाव रहा है। इससे पहले सोनिया गांधी लगातार जाती रही हैं हर चुनाव प्रचार में। कई कांग्रेस के ज़माने में कई योजनाओं का वहाँ से शुभारंभ हुआ है और जब मोबाइल कोड जो हुआ था वहीं से शुरू हुआ था, पुनाना से। तो कांग्रेस का लगाव वहाँ से शुरू से रहा है और कांग्रेसियों को वोट वहाँ से मिलता रहा है। जी, फरीद साहब, आपका क्या एनालिसिस है हरियाणा इलेक्शंस को लेकर? कांग्रेस ने काफ़ी कोशिश की, किसान पहलवान का एक जो इश्यूज हैं उसको बनाया, लेकिन वो उसमें कारगर नहीं हो पाया इसमें। सबसे बड़ी बात जो कही है वो आपके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस
तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई है। क्या कांग्रेस ने हर चीज में जल्दी की, तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह जश्न जल्दी की जलेबी के हिसाब से, तो वो भी जल्दबाजी हो गई थी। तो कैलकुलेशन एक तो था किसानों का मामला और दूसरा था पहलवानों का मामला। इन दोनों मामलों में कांग्रेस को कहीं कहीं ये अंदाजा था कि हम बीजेपी को इसको नीचे कर देंगे, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन का बिगड़ा है। और ये अभी जो पोजीशन है, जिन सीटों में मुकाबला चल रहा है, उस अहम बात ये है कि वहाँ पर मार्जिन बहुत कम है। 100 वोटों से लेके और 5000 वोटों के बीच में दोनों पार्टियों में मुकाबला चल रहा है। तो अभी भी ये बहुत टक्कर की लड़ाई चल रही है वहाँ पर। हालांकि जीत हार के बारे में क्लियर हो गया है, लेकिन ये कि कांग्रेस के जो अंदाजे थे वो फेल हो गए। और ये ओवर कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं था कि सुबह को आपने पहले घंटे के बाद ही जश्न मनाना शुरू कर दिया, आपने वेट नहीं किया उसका। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो था शुरू से था, वो आखिर तक रहा और फिर ये सामने आया। ये जी, अब अगर हम बात करें नतीजों के, एक बार एक अपडेट आपको देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के, क्योंकि अभी परिणाम रिजल्ट्स आ ही रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज won 41 seats, BJP has won 27, Congress has won 6, and PDP is at 3. So still, it'll take some time for results to settle down. Now, Yasmin, if Yasmin is with us, I would like to ask her that the NC and Congress are celebrating. How are they celebrating the victory? Sorry, sir, I'm not able to hear you. My question is, how is National Conference and Congress celebrating their victory today? I think there's some audio problem. I think there's some audio issue. We'll go back to Yasmin later. I'll chip in here, sir. Yeah, you can. So no, I was asking. Yeah, I'll chip in here, sir. Yes, सर यहाँ पे हरियाणा के जो हमने देखा कि ओवर कॉन्फिडेंस था कांग्रेस में और उन्होंने सुबह से ही सेलिब्रेशन स्टार्ट की। यहाँ पे हम सुबह जब ये स्ट्रांग रूम में गए, काउंटिंग सेंटर पे गए और सारा फोकस काउंटिंग सेंटर पे था, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पे इट वाज वेयरिंग ए डेजर्टेड लुक। कोई भी वहां पे नहीं था और न कोई वर्कर न कोई लीडर वहां पे था। और उमर अब्दुल्ला वाज आल्सो सिटिंग एट हिज होम जस्ट glued to his Twitter and watching the analysis. While as अभी जाके 4, 3, 3:30 के बाद उन्होंने बाहर आना स्टार्ट किया और they have started celebrating this. And from the day one, Farooq Abdullah and Umar Abdullah, they both believed that we are not accepting this exit poll. We have to wait for the verdict of the people. तो उसका हमने यहाँ पे अभी यही देखा। और जून हो नेशनल Alaban is the party symbol of National Conference. So that was the main dominant slogan that was one could hear from the streets. So अभी National Conference के headquarter पे और उमर अब्दुल्ला के घर पे भी contingent of journalists and workers, they are there and they are celebrating it. And I spoke to this president of Congress, Tariq Ahmed Karra, and he said कि we are devising a strategy and our priority is restoration of statehood. That is going to be our priority, and we will also formulate our work plan and how we are going to go for the formation of the government. And simultaneously the National General Secretary of Congress, J. Mir, who has also won from the South Kashmir, he has said इसके बाद हमारी गेम स्टार्ट होती है. Now we have a big fight, we have a large battle to win. तो उस पे हमें काम करना है. But he could not dispel what that large battle is going to be, whether it's going to be a restoration of statehood. And Congress by and large has remained tight lipped, very mum on the abrogation of Article 370. उनके किसी भी कैंपेन में Article 370 का कोई जिक्र नहीं हुआ है और जो लास्ट तक उन्होंने मेंटेन किया है. They are just talking about this restoration of statehood and keeping mum on the abrogation of Article 370. तो उस पे हमें देखना पड़ेगा कि अब जो 5 मेंबरान भी नॉमिनेट होंगे, and all the leaders from Congress and National Conference, they're unanimous on this. They cannot let this LG to nominate these. It's an unconstitutional act. It's an act which is to be agitated, which is to be contested. We will not let this to get nominated from LG's office. तो उनका कहना है कि अगर वर्डिक्ट पार्टीज को मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, this should be respected and no tampering should be done on that level. तो उस पे हमें एक
it is going to be an interesting thing in a weeks or so. कल का क्या रहेगा सीन, कैसे उमर अब्दुल्ला, who has already been nominated by Farooq Abdullah that he is going to be the chief minister, वो अपने टीम को कैसे कंसोलिडेट करेगा. और लार्जली जो मुझे ग्राउंड पे लग रहा है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग कैबिनेट, so he is not going to make it a big cabinet. He will take very few people on board initially, or maybe then he will add on. And उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जम्मू को वो कैसे रिप्रेजेंटेशन देगा, because जम्मू has thrown a very fractured mandate. They have again trusted BJP, and BJP at the end of the day could not do well. They could not even open their account in Kashmir. So how that is going to be compensated, that we have to see. Of course, improved in Jammu region. Also, I think they've gained 4 seats in Jammu region if you talk about national conference. But let me ask you that as far as the government formation is concerned, Congress obviously is going to be a part of the government, isn't it? And then when it comes to distribution of portfolios, that is also going to be a bit of Bone of contention. Do you think so? I think, sir, इनके साथ बात करने के बाद ही one can understand कि they are going to have a lot of discussions on this. And Congress, I think National Conference was expecting that they could do much better in Jammu, which they haven't done. And उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि राहुल गांधी को जम्मू पे फोकस करना चाहिए rather than in Kashmir, and he was doing well in Kashmir, I think that has really played a part, and BJP has done really well there, and they have maintained at least 227, and अभी और भी आंकड़े बाकी आने हैं. और इस वक्त कांग्रेस का ये कहना है कि at least we have some base in Kashmir, and this time people have shown that Congress has a strong cadre in Kashmir. और वो कम से कम 6, 7, 8 सीट पे उन्होंने जो बर्तरी हासिल की है, उससे एक मैंडेट उनको भी मिला है. नजीर, ये बताइए कि अब ये सरकार जब बनेगी तो सरकार बनने के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों की जिंदगी कैसे बदल जाएगी? हाउ विल इट इम्पैक्ट पीपल्स लाइव्स? सर, पोस्ट 2019 जो सूरत हाल हमने पूरे जम्मू कश्मीर खित्ते में देखी, because we have been traveling through length and breadth of Jammu and Kashmir, and we have seen how people have expressed their resentment against the downgrading this state into a union territory, and people have largely expressed that statehood should be restored, and issues of governance, issues of development have to be addressed, whosoever comes to the power. And this time we have seen parties like Apni Party, who is seen as proxies, they have just vanished from the ground. Apni Party could not open any account. Then the stalwarts in the politics, Ghulam Hassan Mir, Hakim Yasin, they have just vanished from the scene. And this shows how people are having a different transition now. People want development-centric governance, politics, and besides that, Article 370 is going to be a main core issue for this government, Umar Abdullah-led government. This is going to be a main issue because we'll come back to that now. Let's go to Yasmin. Yasmin, like Nazir was pointing out, कि अब जो नई generation है, was basically centered around development. They want jobs, they want employment, they want better education, better health facilities. They want to grow, because they are a generation which is now looking forward. They are not regressive in any. तो आपको क्या लगता है कि जो इस बार मैंडेट आया है उसमें यूथ जो है उनका एक बड़ा रोल रहा है और उनको अब एक बड़ी उम्मीद जगी है? जी, देखिए, कश्मीर का जो नौजवान है वो डे 1 से ही प्रोग्रेसिव था. कश्मीर का जो बच्चा है वो डे 1 से चाहता था यहाँ पे आईआईटी हो, यहाँ पे कुछ बाहर की कंपनीज आए, वो ऑपरेट करे, लेकिन यहाँ पे हालात कुछ इस तरह के थे कि वो चीजें नहीं हो पाई. तो ऐसे में अब जो बीजेपी का कंटिन्यूअसली ये एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो डेवलपमेंट चाहता है. ऑफ कोर्स वो चाहता है और वो पहले भी चाहता था, बट ये कि वो हो नहीं पाता था. इट्स नॉट समथिंग न्यू कि अब बीजेपी की वजह से उनका माइंडसेट चेंज हो गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर आप कितने टैलेंटेड साइंटिस्ट देख रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं, मतलब
जो भी लोग हैं, बट हाँ फैक्ट ये भी है कि वो या तो दिल्ली से पढ़े हैं या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने पढ़ा है, काम किया है, या बाकी सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे हालात ठीक नहीं थे। अब अभी के टाइम पे ये जो 5 साल है, इसमें मेजर चीज ये हुई है कि हालात खराब नहीं हुए। देयर वाज नो स्ट्राइक, नो हड़ताल, नो बंद कॉल्स। तो ऐसे में अब जो ये रूटीन वाला शिफ्ट है, जो आज का नौजवान है, दे आर यूज्ड टू इट। अब जब हालात बेहतर हुए तो ये जो नौजवान है, इन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। दे हैव ओपन देयर रेस्टोरेंट्स, नया नया बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, ये सारी चीजें यहाँ पे हुई। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये भी एक चैलेंज है कि ये जो 5 साल कोई भी ब्लड शेड नहीं हुआ, कोई भी किलिंग नहीं हुई, दे स्टिल हैव टू मेंटेन दैट सिनारियो, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये भी ग्राउंड सूरत हाल है कि हम जब आज भी रिपोर्ट कर रहे, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड सेंटिमेंट ये भी था कि अब हालात खराब नहीं होने चाहिए। तो यहाँ का जो यूथ है अभी करंट सर्कमस्टेंसेस में यही चाहता है कि जो जैसे अभी हालात है, तो वो सारी चीजें बेहतर होनी चाहिए। सेम इसी वे में कंडक्ट जो है स्मूथली चलना चाहिए, बिजनेस हैम्पर नहीं होना चाहिए, स्कूल्स बंद नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी का जो नौजवान है वो चाह रहा है। बट ऑल्सो इट्स पर्टिनेंट टू मेंशन कि इससे पहले भी जो नौजवान था वो तरक्की चाहता था, बट हाँ कुछ ऐसे फोर्सेस थे जो शायद नहीं चाहते थे कि कश्मीर तरक्की करे। बट अभी का नौजवान एक और चीज चाहता है, जॉब्स के साथ साथ एक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी चाहते हैं यहाँ के नौजवान। कि फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में कोई इशू होता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, तो वहां पे अलाउ किया जाता है। कोई भी इशू है तो जंतर मंतर पे जाके लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो चीजें कि राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू एक्सप्रेस, पीसफुल प्रोटेस्ट, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ का नौजवान भी इक्वली चाहता है। Absolutely. Now we'll take a short break. We'll be back soon. आवाज धार्मिक सौहार्दाचा, कहाण्या देशातील सलोख्याच्या प्रदेशांच्या, बातम्या देशाच्या गौरवाच्या, आम्ही घेऊन येतो तुमच्यापर्यंत। आता घुमू लागलाय सर्वांना सामावून घेणाऱ्या भारताचा आवाज, द व्हॉइस मराठी। জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰেমৰ বাৰ্তা, দেশৰ সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ ছবি, দেশ আৰু দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰা ইতিবাচক খবৰ লৈ আহোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। আৱাজ, দ্য ভইচ অসম। এতিয়া জনসাধাৰণৰ মাজত মুখৰিত হৈছে সৰ্বাংগীন ভাৰতৰ কণ্ঠ। Asha ji, Nazir was pointing out pointing out an issue. It could be a bit of issue, and the theory is also doing rounds that now that NC and Congress are together, they might try to build up a narrative in which the Congress would go in for, they'll pitch for a full statehood, and the NC will talk about the abrogation, which, Farooq Abdullah also hinted about it, that the people have voted against this mandate. Do you think that this could be a possibility in this, alliance? Well, when a government comes, I think they come to rule and they come for governance. They don't come for raking issues for next elections. Right. That they will do when next elections come. Sure. They'll come and they'll have to face people's aspiration. They'll have to face people's demands. I mean, all the things they have promised to them. As far as statehood is concerned, that has already been assured by everybody. I think Home Minister, Prime Minister, everybody said we will give. Right. But when they will give, that remains to be seen. Yes. And I think that is linked to the security issue also. Till the whole situation stabilizes in J&K, because the big changeover has taken place. So whenever they get confidence that system is working well in J&K, probably then they will give them. It's a promise. But we all know that it's not possible for a state political party to get Article 370 back. Absolutely. It is part of the Indian Constitution. That is not possible. They're talking through their hat. At the most, they can pass a resolution in this. They have passed a resolution for autonomy also. Yes. I mean, they can do whatever they want. Yes. But that is not an issue with the public. That we have seen in election campaign also. Sure.
it is not an people want jobs. J&K is facing the highest unemployment rate in the country. Yes, because for 3.5 decades, no private party has gone and invested in J&K for obvious reasons. Now, Umar Abdullah, when he comes to become the chief minister, his first job is to get companies to set up their shops there so that they can give jobs to the people. His job will be to go to center and say, give me that college, give me that school, give me that office. Right. So Article 370 and all, that is all humbug. That is not going to happen. Nor that is an issue with the people. तो ये साफ है फरीद साहब के परफॉर्मेंस से एक बहुत जरूरी एक जो मापदंड रहेगा कि 10 साल बाद एक सरकार में आना और फिर लोगों की एक नई जनरेशन आ गई जिसकी एक्सपेक्टेशन है, जैसे यास्मीन कह रही थी कि वहाँ के युवा जो है उनको आवाज चाहिए, अगर वो किसी चीज से नाखुश हैं तो वो उसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो उस हालांकि उमर अब्दुल्ला एक उनको यंग लीडर कहा जाता है, काफी डायनामिक माना जाता है, लेकिन उनके लिए भी जो कहा जा सकता है चुनौतियां कम नहीं होंगी इस परिस्थितियों में। बिल्कुल आतिफ साहब, 96 का इलेक्शन मैंने देखा था कश्मीर का। उस टाइम 96 के इलेक्शन में कोई चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो बोलते नहीं थे कुछ, खासतौर से यूथ जो था वो बोलता नहीं था, बोलता भी था तो वो कोई बेहतर चीज नहीं बोलता था। इस बार जो चेंज देखने में आया वो इलेक्शन में कि एक तो ये था कि बेखौफ होके बोले, लाल चौक पे बोले, डल लेक पे बोले, वो ऐसी जगह में बोले जहाँ सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, कश्मीर भी देख रही है, ये नहीं कि आप घर में बंद कमरे में बोले। तो वो यूथ जो था उसने हर प्लेटफॉर्म पे बोला, चाहे वो आवाज की बैनर परचम में बोला हो, उन्होंने किसी कॉलेज के फंक्शन में बोला हो, हर जगह यूथ की आवाज आई है। मेन मकसद जो था वो था एजुकेशन, बेरोजगारी, रोजगार चाहिए, बहुत सारी चीजें थी वो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, किसी ने भी पॉलिटिकल इशू नहीं उठाए। तो ये चेंज है। और जो आपने पहले इलेक्शन देखे होंगे उसमें और इसमें सबसे बड़ा फर्क ये था कि यूथ का जो अप्रोच था वो बहुत अलग था। तो पॉजिटिव चीज है वो। और इस बार एक वैसे तो डेलीगेशन आता ही है डिप्लोमेट्स का, इस बार भी उन्होंने काफी पूरे जम्मू कश्मीर में दौरा किया, उन्होंने हर चीज अपने आप देखी। इसमें मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा था कि उमर अब्दुल्ला के लिए चुनौती बड़ी है, वो इसलिए कि चूंकि उम्मीद बहुत हो गई है, यूथ की जो उम्मीदें हैं, और सरकार आपकी एक स्टेट में है और केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, तो सरकार से मनवाने के लिए अपनी चीजें उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और सरकार आपके केंद्र में नहीं है, तो वो सारी चीजों को करा पाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगले 5 साल जो है उनके लिए कोई आसान नहीं होगा। जीत तो आसान लग रहा है लेकिन सरकार चलाना थोड़ा भारी पड़ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम यास्मीन के पास वापस जा सके, अगर वो हमारे साथ जुड़ी हैं, तो आपसे पूछना चाहेंगे, आपने इतने एक्सटेंसिव कैंपेन ट्रेल्स की और आपने इल्तिजा के साथ भी किया, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती जी ने इस बार काफी जल्दी अपनी हार मान ली। she considered her defeat quite early in the day. What do you say? जी देखिए, जहाँ से इल्तिजा मुफ्ती ने कंटेस्ट किया था इलेक्शन, वो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो जगह थी जहाँ से मुफ्ती सईद जीता करते थे, जहाँ से महबूबा मुफ्ती जीता करती थी, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती को आज वहाँ से वोट्स ज्यादा नहीं मिले हैं। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि जो बीजेपी और पीडीपी का कोalition हुआ, लोग उससे बड़े नाखुश थे। लोग नहीं चाहते थे कि पीडीपी जो है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। लोग किसी भी कॉस्ट पे नहीं चाहते थे कि बीजेपी को कश्मीर में एंटर होने दे। अब चूंकि पीडीपी ने वो गलती की और उसका जो रिजल्ट है वो आज हमने ऑन ग्राउंड देखा, और वही एक मेजर फैक्टर बताया जा रहा है कि पीडीपी को अगर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अब वोट नहीं पड़ा है, मींस कि कश्मीर में भी कहीं पे अब नहीं पड़ेगा। रीजन ये है कि उन्होंने अलाइन जो है बीजेपी के साथ किया, एंड उसकी वजह से वो काफी पीछे चले गए। आई थिंक अब उनको ग्राउंड पे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है कि जो उन्होंने भरोसा लोगों का खोया है उसको वो वापस लेके आए। अब अगर इल्तिजा की बात करूं, मैं उनके कैंपेन ट्रेल में उनके साथ थी, तो मैंने देखा कि लोगों का हुजूम उनके पीछे था, बहुत सारे लोग थे, बट इलेक्शंस आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। जो आपके वोट, ये जो भीड़ है दैट डजंट टर्न इनटू वोट्स। तो कुछ खासकर मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो लड़की थी, तो तमाशा देखने के लिए भी काफी लोग आते हैं, खासकर कश्मीर में, तो वो भी एक फैक्टर था। तो इवेंचुअली आई थिंक उनके लिए इस बार जो कंटेस्ट था लकी नहीं था, बट ये भी है कि फर्स्ट टाइम है, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट स्टिल जो थोड़ा बहुत उन्होंने जमा किया है वहां पे वोटिंग परसेंटेज, तो हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में शायद वो उसको इम्प्रूव कर सके। Asha ji, what do you think would now be the role of Farooq Abdullah? Will he be a mentor, or will he have
will he intervene in the government matters? Because his statement today, after the spectacular, sort of results, were quite measured. What do you say is going to be his role? Will he be a margdarshak, or will he be more than that? I think this election for National Conference was it was worked on by Umar Abdullah. Farooq Abdullah may have kind of guided his son or whatever, but he was not very active. One, age is a factor, and second, he has, his health is not that okay. Age also is a factor. So I think he'll be more of a margdarshak, if I can say so. His son will run the regime, but there are a lot of old timers who have won the elections this time, who have been colleagues of Farooq Abdullah, their families. So that coterie remains. They are the soul and spirit of National Conference. National Conference is ultimately a cadre-based party. It has a history. So that coterie will always remain there. And for Umar Abdullah is a very private person. He doesn't have any friends. At the most, he goes and plays golf and goes go-karting, those kind of things. He is not known to have a personal coterie. But party coterie will always be there, and that will be from the first families, the first families, the second generation of political leaders. They will be very close to him. But Farooq Abdullah, I think he will like to take a back seat, and as such, he is not that much interested in politics and all beyond survival. He would, if it permits, he would like to become a Rajya Sabha member and live happily in Delhi and go wherever he wants to go. I don't think he's that interfering kind. He's not a politically very, what I should say, obsessed person. He likes to live a good life, and in this old age, most probably he'll get a Rajya Sabha seat and he'll be happy with that. आशीष साहब, अगर हुड्डा साहब की बात करें तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जो है लगता है अब तो उनको ऑपोजिशन में बैठना पड़ेगा, जो जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं। उनका क्या रोल देखते हैं आप? फिर फर्दर एनर्जाइज करना पड़ेगा, कहीं मेहनत में कमी रह गई उनकी। आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ कांग्रेस? देखिए, मैं बीजेपी के एक अदा से बड़ा कायल हूँ उसका, कि जहां से रिजल्ट आते हैं वहीं से उसका अगला काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल। झारखंड में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, रिजल्ट अभी रिजल्ट आया है और उन्होंने अनाउंस किया है अभी कि हम पूरे देश में जश्न मनाएंगे इस जीत का। तीसरी बार उनकी सत्ता आई है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में अच्छी स्थिति में है। अब कांग्रेस में क्या स्थिति है कि शैलजा कह रही हैं कि जो पुराने फैसले हैं उसका हिसाब लगाना होगा, वो जो निर्णय लिए गए उनकी जवाबदेही तय होगी। दोनों में फर्क यही है कि उनको भी एक स्टेट में, बीजेपी को एक स्टेट में उम्मीद से ज्यादा नहीं आई है, चीजें नहीं मिली हैं, पर वो आगे की देख रहे हैं। और हम ये है कि हमारी स्थिति ये है, कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो कह रहे हैं कि अभी हिसाब देना पड़ेगा। जब समझौते की बात आई थी, आम आदमी पार्टी से समझौता होने वाला था, जो अभी जो 8-10 सीटों का जो फर्क चल रहा है, मेरे ख्याल से अगर वो उस वक्त समझौता हो जाता आम आदमी पार्टी से तो आज तस्वीर बदली होती। पर उस वक्त हुड्डा साहब ने कहा कि नहीं, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, और हम इकट्ठे हो गए और उन्हीं के अड़ जाने से ये समझौता नहीं हुआ। आज रिजल्ट हो जाता तो जवाबदेही सबसे ज्यादा उनकी ही है। और चूंकि वो विपक्ष में, उनके लिए बहुत नया कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष में पिछले सरकार में भी थे, इस बार भी मेरे ख्याल से लोग उनको चुन करके दे देंगे, उनकी कोई खास भूमिका नहीं होगी। ये है कि बुढ़ापे में जो एक सत्ता हाथ में आने वाली थी, थोड़ी सी गलती की वजह से वो फिसलती सी मुझे दिख रही है, और रिजल्ट मेरे ख्याल से सही रहेगा। By the way, I just want to add, AAP has won one seat from J&K. Doda they have won. Yes. That's interesting. Yes, and now let's go back to Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, our fabulous team of journalists, Yasmin Khan, Nazir Ganai, and Athar, our camera video journalists, they have been doing a wonderful job. And during the elections, they had traveled length and breadth of the entire valley and Jammu also. We'll give you a glimpse of what they had recorded when they had spoken to the people on ground. What did the people, the voters, had to say then? जनाब,
100% ग्राउंड पे चेंज आएगी, क्योंकि नौजवानों ने इस साल वोट डाला, पहले नहीं डालते थे, यहाँ बाइकआउट होता था, बाकी चीजें होती थी। सबसे हमारा जो मेन मुद्दा है वो है बेरोजगारी। बच्चे बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, गलत कामों में फंस गए हैं, किसी का रोजगार ही नहीं है, कहीं पिछले 8-10 साल से कोई पोस्ट भी नहीं निकाला इन्होंने, कहीं इंटरव्यू नहीं हुआ। हमने तो इसलिए वो डाला, इट्स माय फर्स्ट वोट, तो मैंने इसलिए वो डाला कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। 10 साल से हम परेशान है, बेरोजगारी है, तो काम कहीं नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, खाली लोग परेशान है। बीजेपी सराया, इसलिए वो जो है जो लड़के जो ड्रग्स में गए हैं उनको जब सारा नहीं मिला वो ड्रग्स में चले गए। ये ड्रग्स छोड़ना चाहिए, ड्रग खत्म होना चाहिए, बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर करना चाहिए, इसलिए हम वोट देते हैं। ऑब्वियसली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नुमाइंदा चुने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, तब ये वोट डालना है। कोई भी मसले का अगर आप जड़ देखेंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट औरतों पे बढ़ रहा है, और मैं ये समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा मैनिफेस्टो लेके आई है जिसमें बिलखुसूस औरतों के लिए उन्होंने स्पेशली ये ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है, जो उन पे ज्यादा मुश्किलें आई उनको हल उन्होंने उसमें तलाश किया हुआ है। चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो मैरिज असिस्टेंस का हो, चाहे वो विडो पेंशन का हो। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। जैसे हमारा ये कॉलेज है जहाँ पे आप बैठे हैं, ये 1951 में यहाँ पे हो गया, तो उसके बाद इसकी कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। हायर सेकेंडरी हमारी है वैसे की वैसी है, जो वो भी 2051 में यहाँ बनी है। रही बात पानी की, सबसे बड़ी किल्लत है यहाँ पे। आप अगर देखेंगे कि पानी का उद्गान यहाँ पे इतना है कि मेरे ख्याल में 40 से 45% लोगों तक पहुंच जाती है। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे है, एम्प्लॉयमेंट जो है। Actually, what is clear is that the people's expectations are quite high. But more interestingly, as we saw in those videos, the people are coming out and speaking fearlessly. And, they are, expressing themselves unlike the earlier times. Is it because that the separatist agenda, the fear of terror, which was there, which was stopping people, holding them back, is not there anymore, and they're coming out and expressing themselves? Yes, you're right. Certainly, that is the issue. Earlier, there were open threats. People used to be killed. Their relatives used to be killed. The houses of candidates used to be blasted. And I remember I've gone on a campaign with the JKPCC chief, Mr. Carr. He was on the road. There were 10 people with him, 200 security men and 2 journalists. And we went to Handwara. Handwara was all closed. There was not a soul to listen to him. It was not that they didn't want to listen to him, because they were afraid. And a day before that, a close associate of Carr, his house had been blasted. We went to his house, but he closed his house. He said, "No, don't come to my house." So that kind of people have come out of that kind of a problem, all thanks to the strict rule of law implemented by the Modi government. We have to give credit where it is due. Yes, there are not two ways about it that there has been no major incidents during this file. Now I'd like to thank my colleagues, both Yasmin and Nazir in Srinagar. Thank you for joining us. Results are almost a mixed bag for everybody. Both there's reasons for both BJP and Congress and NC to celebrate. But what is more important is that the biggest takeaway of the results is that Jammu Kashmir's democratic political process is now complete. And the good thing is that the people of Jammu and Kashmir are going to have their own government very soon, at the state levels also. That's all we have in this coverage. Thank you very much for joining us. We'll see you soon.